किछि दिन धरी लोकसभा होई पड़िथिला अस्थिर विरोधी हंगामा नाराबाजी भितरे बारंबार हेउथिला मुलतवी कथा जाई हाटरे पड़ी दांडरे गड़िला बाचस्पति विरोध में अनास्था नोटिस मध्य पठाइले विरोधी ताहा एबे लोकसभा सचिवों पाखरे अछि एहारि भितरे बुधवार लोकसभा रे कहिसंती विरोधी दल नेता राहुल गांधी फिट रहिबा पई मार्शल आर्टर महात्म्य बुझाइबा आलोरे सरकार को जोरदार घेरिछंती राहुल एपरिक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उपरे मध्य जोरदार बर्षिछंती कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। नारावाने जी राइट्स प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। घबराने की किसी से प्रतिपक्ष के नेता सर आप बोलने नहीं रहे। नहीं ये मत आरोप लगाइए। शेषरे लोकसभा रे कहिले राहुल होहल्ला भितरे कहिले विरोधी दल नेता बजेट को नहीं सरकार को जोरदार घेरिले ट्रंप को लोकसभा कले कड़ा समालोचना प्रबल हंगामा विरोधी शाणित आक्रमण शेषरे लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला विरोध में अनास्था नोटिस पर शेषरे लोकसभा रे कहिबार सुजोग पाइछंती विरोधी दल नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति बजेट अभिभाषण उपरे निजर मंतव्य रखिबाकु जाई राहुल आरंभ करथिले मार्शल आर्ट रु आ प्रधानमंत्री को करिछंती टार्गेट। You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। सही परी राहुल गांधी डाटा को नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करिछंती जोरदार टारगेट। The first thing we would say is President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. सही परी भारत और अमेरिका ट्रेड डील को नहीं मध्य बर्षिछंती राहुल कौन कहिछंती से सुनंतु। 3% was the average. It has now gone up to 18%. 6x increase. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports and no commitment to us. भारत रूसीय तेल किनिबा बंद करिबा नै अमेरिकार घोषणा प्रसंग रे मध्य पर्सिछंती विरोधी दल नेता। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look. And if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. भारतर कृषि और कृषकों को नहीं कौन कहिछंती राहुल सुनंतु। For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. बजेट को नहीं मध्य सरकार को समालोचना करिछंती राहुल। The budget recognizes that we are going into a dangerous time, intensifying geopolitical conflict.
The budget recognizes that energy and finance are being weaponized all across the world. Dollar is being weaponized, dollar is weakening in value, gold, silver prices are going up. Everybody can see this. But there is nothing in the budget. There's absolutely nothing in the budget that looks into these two issues. There is nothing in the budget about energy and finance weaponization. There is nothing in the budget about the intensifying geopolitical conflicts and what we are going to do about it. The budget just reads like any of their budgets. सरकार देश को बिक्री करी देथिबा भली संगीन अभियोग मध्य लोकसभा रे करिसंती विरोधी दल नेता राहुल गांधी। Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? सेबटे राहुल को अभियोग को भित्तिहीन बोली कहिसंती संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू। When you are leveling serious charges without any reason, without any backing of substance, without any proof, you are just making any wild allegation. I'll give you a reason. That will diminish your own position. I'll give you a reason. I'll give you you a are reason. leader of the opposition. Okay. Please make substantive point. Yes, we I are will. here to listen to your suggestion. I will. If you give good suggestion, we will listen. राहुल को अभिभाषण समय रे लोकसभा अध्यक्ष मध्य बारंबार परामर्श देउथिले। गृह रे कोन कहिबा उचित कोन कुहाजिबो नाही से ने मध्य देउथिले परामर्श। Not there, sir. अगर आप मेरी We know बात your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I am advising you. Here if I am advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. प्रबल हट्टगोल आरोप प्रत्यारोप भितर शेष में लोकसभा रे कहिसंती राहुल गांधी और सरकार को करिसंती कड़ा समालोचना। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। 20 वर्ष फ्री टैक्स हॉलिडे को नहीं निर्मला आड़ को इंगित करिसंती राहुल गांधी। या सहित से हसुथिबा नै मध्य कहिसंती विरोधी दल नेता। तेणे राहुल को कड़ा काउंटर करिसंती बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। Free tax holiday to anybody who wants it. The finance minister is smiling. She likes to smile. She likes to smile a lot. 20-year free tax holiday to anybody who wants it. To the big tax companies. This is what you've done on data. वो निर्मला जी की मुस्कुराहट की बात कर रहे थे। मोदी सरकार में एक के बाद एक ऐसा निर्णय हुआ है। आज महिला शक्ति को देखिए, देश की राष्ट्रपति भी महिला है और देश की वित्त मंत्री भी महिला है। 9 बार लगातार इतिहास रचने के लिए और देश को बजट देने के लिए मैं ऐतिहासिक बजट पर माननीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं।